Hello everyone. In this lecture, I'll be discussing about the concept of array. So what your array is collection of homogeneous data elements. That means elements having similar data type. अगर मेरे पास एक integer array है, all the elements in that array will be of integer type. अगर मेरा character array है, all the elements in that array will be of character type. अगर मेरा floating point array है, all the elements in that array will be of floating point type. So that is your homogeneous collection of data elements. Now, what the second property of your array is that all the elements of array are stored in contiguous memory locations. Contiguous means one after another. तो यहाँ पर क्या बेनिफिट हो जाता है बेसिकली कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है, वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन योर एरे. अगर मैं इंटीजर एरे की बात करूं, एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट है बेसिकली. तो इफ माय फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट सपोज एड्रेस नंबर 1000, तो सेकंड एलिमेंट जो मेरा स्टोर होगा इट विल बी एट 1004, नेक्स्ट एलिमेंट 1008, देन 1012 and so on. So that means elements of array are always stored in contiguous memory locations. All the elements of your array are stored at specific index numbers. So the first element will be stored at index number 0, second element at index number 1, third element at index number 2, and so on. Now next I'll be discussing what are the different operations that we can perform on arrays. So here I have mentioned 6 operations: traversal, insertion, deletion, sorting, searching, and merging. Traversal simply means where you are processing each and every element of your array. That means हर एक element को मैं process कर रहा हूँ, हर एक element को मैं maybe print करा रहा हूँ. That is your traversal. Insertion means that we are trying to add some new value to our array. I'll be taking it with the help of example also. Deletion, अगर मुझे अपने array में से कोई element delete करना है. Then sorting means that if you need to arrange the elements of your array in some specific order, either in ascending order or descending order. Searching means if you just need to find any element within your array. And merging, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा array exist करते हैं and if you want to just combine all those arrays into one, that is basically the concept of merging. So in this lecture, I'll be discussing about concept of your traversal, insertion, deletion, and merging. Sorting and searching, I'll be discussing in separate lecture. So the first thing which I'll be discussing over here is traversal. So just like I told you, what your traversal is, traversal means processing of each and every element. तो suppose अगर मेरे पास एक array है और उस array के अंदर 10 values है from index 0 to index 9, और मुझे अगर सिर्फ उनको process करना है, maybe suppose मुझे सिर्फ उनको print करना है, then that thing is known as traversal. तो यहाँ पर तो हम सीधे लूप लिख लेते हैं for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, printf %d array I. So that means each and every element of your array gets printed. Right? I've just taken one example of printed. आप किसी भी purpose के लिए उसको process कर सकते हैं. Right? So this is traversal. Next concept which I am discussing over here is insertion. That means if I need to insert a new item into your array at some position. तो यहाँ पर ये मैंने इसकी एक छोटी सी एल्गोरिथम डिस्प्ले करी है. You can see कि मेरा एक array है जिसके अंदर n number of elements हैं and suppose I need to insert one element with name item at some specific position POS. Right?
तो I'll be discussing this concept with the help of one small example. So let us suppose कि मेरे पास एक छोटा सा एरे है और उस एरे के अंदर सपोज मेरे पास 6 वैल्यूज है. आई एम हैविंग वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50, 60. And these values exist from index number 0 till index number 5. Right? Now, what my concept is that I need to insert a new value. तो suppose user ने मुझे कहा that insert one new element or item at suppose position number 3. So when I'm saying position number 3 means index number 2. और यूजर ने सपोज मुझे यहां पर कहा कि इंसर्ट 25. राइट, मैंने यहां पर सॉर्टेड एरे का एग्जांपल लिया है. यू कैन टेक एग्जांपल और यू कैन इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ योर अनसॉर्टेड एरे ऑल्सो. ठीक है, तो जैसे यूजर ने कहा कि यहां पर 25 इंसर्ट करना है एट पोजीशन नंबर 3. पोजीशन नंबर 3 मींस इंडेक्स नंबर 2. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव दिस 30 फ्रॉम हेयर. यहां से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें यहां से 30 को रिमूव करके और इसकी जगह 25 को इंसर्ट कर देना है. दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट. दिस इज एक्चुअली रिप्लेसिंग, कि यहां पर मैंने 30 को रिप्लेस कर दिया. But my target is not to replace 30. My target is to insert 25. तो how we are going to do this is, अब देखिए मुझे 30 की जगह 25 लेके आना है. तो that means 30 को नेक्स्ट लोकेशन पर शिफ्ट करना पड़ेगा. That means 30 it has to be shifted to index number 3. 40 it has to be shifted at index number 4. 50 it has to be shifted at index number 5. And 60 it has to be shifted to the next location. Right? पर अगर मैं इसको यहीं से स्टार्ट करूं, 30 को 40 की जगह डाल दूं, तो दैट मीन्स 40 विल बी अपडेटेड. 40 के ऊपर 30 आ जाएगा. 40 विल बी लॉस्ट. तो अगर मैं आगे देखूं तो सब जगह मेरा क्या होगा, 30 ही चला जाएगा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लूप फ्रॉम एंड. तो सबसे पहले क्या करेंगे, I'm going to shift this 60 at a new index position, that is index number 6. तो मैंने 60 को एक नए इंडेक्स पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया. राइट, नाउ दिस 50 it has to be shifted at index number 5. तो दैट मीन्स जहां पर मेरा 60 एग्जिस्ट करता था, दैट मीन्स एट इंडेक्स नंबर 5, वहां पर मैं क्या ले आऊंगा, फोर्थ पोजीशन से उठा के या फोर्थ इंडेक्स से उठा के 50 आई विल शिफ्ट इट एट इंडेक्स नंबर 5. राइट, सिमिलरली नाउ योर 40 watt was existing at location number 4, that means index number 3. so that 40 it will be shifted at index number 4. okay, now 30 which was existing at index number 2, because this is the position where your element has to be shifted, because see position is 3, position 3 means index number 2, so that means this is the position where our 25 has to be inserted. So 30 it gets shifted at index number 3. Right, now we are available with this third position, that means index number 2. So what we can do is now we are out of loop, क्योंकि हमारा loop कहाँ तक चलेगा, our loop will execute till you find that specific position where your element has been or has to be shifted. Right? तो यहां से 30 चला जाएगा and 25 gets inserted over here. So this is insertion of an element into your array. That means मैंने एक नया element अपने array के अंदर add कर दिया. Now, initially, I was having n is equal to 6 elements in my array. Now, number of elements that in my array are 6 plus 1, that is 7. That is from index number 0 till 6. Right? So, this is how we are going to implement the concept of insertion in array. So, this is my algorithm also. You can see यहाँ पर एक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, i greater than equal to position. That means
जो यूजर ने पोजीशन स्पेसिफाई करी है कि किस पोजीशन पे मेरे को एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट करना है, उस पोजीशन तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आई नीड टू शिफ्ट इट एट नेक्स्ट लोकेशन, राइट। और लास्ट में n को अपडेट कर दिया, दैट मीन्स n इज n+1 बिकॉज वन एलिमेंट हैज बीन एडेड, राइट। So this is the concept of inserting a new element in linear array. Next concept which I'll be discussing over here is deletion. That means again अगर मेरे पास एक array है और उस array के अंदर से मुझे किसी element को delete करना है, so how we can do that? तो फिर से let me take one small example for this, then I'll go with this algorithm. अगेन व्हाट आई एम कंसिडरिंग ओवर हियर इज कि सपोज मेरे एरे के अंदर फिर से सपोज 6 वैल्यूज हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, which is at index number 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब मुझे यूजर ने कहा कि डिलीट योर एलिमेंट एट पोजीशन नंबर 3. पोजीशन नंबर 3 मींस इंडेक्स नंबर 2. दैट मींस मुझे यहां से क्या करना है, 30 को डिलीट करना है. तो अगर 30 को डिलीट करना है तो अब इस पोजीशन को खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं, दैट मींस इंडेक्स नंबर 2 को वी कैन नॉट लीव ब्लैंक, बिकॉज एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट एलिमेंट्स ऑफ एरियाज आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस. तो यहां पर क्या होगा बेसिकली, फिर this 40 which was existing at index number 3, it will be shifted at index number 2, 50 will be shifted at index number 3, 60 will be shifted at index number 4, और एक एलिमेंट हमारा यहां पर कम हो जाएगा, राइट. तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब 30 तो हमारा फिर से लूप चलेगा, वही जैसे इंसर्शन के केस पे चला था. यहां पर पोजीशन से स्टार्ट होके मेरा लूप चलेगा टिल योर लास्ट एलिमेंट. तो 40 विच वॉज एक्सिस्टिंग एट इंडेक्स नंबर 3 वो मेरा शिफ्ट हो जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पर. 50 विच वॉज एट इंडेक्स नंबर 4 it gets shifted at index number 3. 60 which was existing at index number 5, it gets shifted at index number 4. And what we are going to do is we are just going to remove this last position, that means last index. Initially number of elements in my array it were 6, right. पहले 6 एलिमेंट्स थे मेरे array के अंदर, that means value of n it was 6. now what we are going to do is n is equal to n-1. तो that means अब मेरे पास कितने रह जाएंगे, 5 एलिमेंट्स. that means index number 0 to index number 4. so this is how you are going to perform deletion of elements in your array. so you can see this algorithm also now, that my loop it is executing from position to n-1, right. if n is 6 it will execute till 5-1 तक. तो सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया एंड एट लास्ट व्हाट इज डन इज n इज इक्वल टू n-1, एक एलिमेंट हमने वहां पर कम कर दिया, राइट. so this is how you are going to perform deletion of your elements from array. now I'm going to discuss one more concept over here, that is merging. तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ एक, कि अगर मेरे पास सपोज 2 सॉर्टेड एरेज है और उन 2 सॉर्टेड एरेज को अगर मैंने आपस में मर्ज करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट merging. So what I'm considering for this is, suppose I'm having 2 sorted arrays. Maybe suppose my first array A1, it is having 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. These are the elements of my array 1 from index number 0 till index number 6. वही मेरा array 2 है, which is having 2, 4, 6, 8. These are 4 elements in your array 2. अब मुझे क्या करना है, एक array 3 बनाना है, और इस array 3 में क्या होंगे, elements of array 1 and array 2, और वो भी sorted होने चाहिए, राइट. अब एक तो कॉन्सेप्ट आता है कि मैं दोनों एरे के एलिमेंट्स को एरे 3 में डाल दूं, पहले एरे 1 के एलिमेंट्स को, फिर एरे 2 के एलिमेंट्स को, और बाद में कोई सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई कर दूं.
But what I am doing over here is I'll be comparing the elements of array 1 and array 2. जो भी element छोटा होगा, that element will be inserted into your third array. तो that means मेरा जो third array automatically बनेगा, it will be sorted. तो अगर हम यहाँ पर देखें, array 1 के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं और array 2 में है मेरे 4 एलिमेंट्स. तो दैट मीन्स 7 + 4 11. तो यानी कि जो मेरा थर्ड array बन के तैयार होगा, in that array I'll be having 11 elements from index number 0 till index number 10. Now, how your process is carried out? सबसे पहले जो array 1 का फर्स्ट एलिमेंट है और array 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट मीन्स 1 and 2, these two elements gets compared, और इन दोनों एलिमेंट्स में से जो भी छोटा एलिमेंट होगा, that element moves to your third array. वन इज स्मॉलर, तो वन मेरा थर्ड array में चला जाएगा. सो वन इज आउट. नाउ सेकेंड एलिमेंट ऑफ योर फर्स्ट array and first element of your second array, that means 3 and 2. So this 3 and 2 gets compared now. दोनों में से 2 छोटा है, तो 2 moves to your third array. Similarly, second element of first array now and second element of your second array, that means 3 and 4 gets compared. 3 जो है मेरा 4 से छोटा है, तो 3 moves to your third array. Right? Now 3 is out. Now 5 and 4 gets compared. 4 is smaller, so 4 moves. Similarly, then 5, then 6, then 7, then 8. तो अगर अब यहाँ पर देखें तो comparisons have been done. जहाँ तक possible था comparisons दोनों array के elements के हो गए, and your elements have been moved to your third array. Now we are left with 3 extra elements of your array 1. तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे. वी विल बी हैविंग सम डिफरेंट लूप फॉर दिस. तो ये एरे के एलिमेंट्स ऐसे ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे. इफ देयर वुड हैव बीन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन योर एरे 2, दोज एलिमेंट्स वुड हैव बीन शिफ्टेड टू योर थर्ड एरे लाइक दिस ओनली. तो चाहे एरे 1 के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, चाहे एरे 2 के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, ये एलिमेंट्स ऐसे ही लास्ट में आपके थर्ड एरे के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे. तो यू कैन सी दिस थिंग ओवर हियर दैट your third array A3, it is also having sorted elements. Right? This is the process that how you can merge 2 sorted arrays into your third array. Right? In this lecture, I have discussed a few concepts related to your arrays. So I'll be discussing about concept of sorting and searching in my future lectures. Thank you.